Did you all are able to hear me? आवाज आ रहा है आप लोगों को? चलिए, so let us continue, friends. लास्ट सेशन हमने ना फ्रेंड्स टीडीएस का जो चैप्टर था that we have closed in last session. Last session we have closed the topic of TDS. We have learned TDS accounting, all the important sections. So, अगर आप TDS पढ़ रहे हो friends, what is expected from you? I mean, what does the employer required from you as far as topics of TDS is concerned? So, friends, first of all, you should know all the sections. Friends, you should know all the sections, different sections under which TDS has been deducted, right? Then, friends, TDS computation. All the sections under all the different sections under which TDS has to be deducted. अलग-अलग sections पर जो TDS deduct करना है, वो section आपको पता होना चाहिए. Then TDS computation of TDS. TDS counting, how to record TDS related transactions, TDS accounting, and online payment of TDS, TDS e-payment, challan payment using challan number ITNH 281. Friends, using challan number ITNH 281, we used to pay TDS to the government. Challan number ITNH 281 यूज करके हम गवर्नमेंट को TDS क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं. But challan payment and second, yeah, TDS return filing 24Q or 26Q as the case may be. 24Q or 26Q as the case may be. Yes, friends. 24Q कैसे फाइल करना है, 26Q कैसे फाइल करना है, friends? The return filing. At least you are expected to know all these topics as far as TDS topics is concerned. इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए. Yes. So do revise, friends. Do revise whatever we have done. हमने जो सेशन में किया है, जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए, फ्रेंड्स आप रिवाइज करना. Wherever you find any kind of difficulty, I'm always there. कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है, फ्रेंड्स, तो I'm there. You all can connect with me. Yes, you all can connect with me. Okay. So let us continue, friends. Continue करते हैं. We'll start with the tax. Friends, TDS already हम discussed किया. One part of tax we have already discussed. आज आगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. Taxation. So friends, tell me, whom we paid tax, friends? What is tax? Tax, friends, we can say a certain sum of money which we as a citizens of India we pays to the government. आप इनकम कर रहे हो, फ्रेंड्स, यू जनरेट इनकम, पे द टैक्स. आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, आपका बॉस आपके सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स कट कर. आप कोई प्रोडक्ट परचेस करे, कोई सर्विस ले रहे हो, एवरीवेयर somehow or the other, friends, in all the elements, whatever products, services we are using throughout the day, knowingly or unknowingly, friends, everything has tax element. हर जगह tax है. So who basically collects the tax, friends? It is a government, friends.
It is the government of India. It is the government of that country collects the tax. It is the government of that country which basically collects the tax. Then who pays the tax? Who pays the tax? Who pays the tax? Again, friends, it is a citizens. It is a citizens like you and me, citizens of India. We as a citizens of India, we pays the tax to the government. We as a citizens of India, friends, we pays the tax to the government. Now next question comes into picture is that friends, government हमसे tax क्यों ले रही है? Why? Why does or what is the purpose government collects the tax from us? So try to understand, friends. Whatever taxes we pay, that is the source of revenue for the government. हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू फ्रेंड्स इनकम है. एंड फ्रेंड्स the major sources of revenue for the government is the major sources of revenue for the government is a tax. गवर्नमेंट के लिए इनकम का जो मेजर क्या बोल सकते हैं सोर्स है फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्स. So friends, whatever taxes we pay, government uses that fund for the overall development of the country. हम जो टैक्स पे करते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट उस पैसे को कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या करती है फ्रेंड्स यूज करती है. Overall development means what, friends? Overall development means what? Government uses that funds basically for providing health-related facilities, health-related services, like construction of clinics, construction of hospitals. Yes. Government uses that fund for promoting education, for spreading education in the country. Construction of schools, colleges, universities. Government uses that funds for providing better infrastructure, road, highways, railways, good quality of highways, roads, and all that infrastructure. Government uses that funds for the security of the nation. देश की सुरक्षा पे भी तो पैसा खर्च है ना फ्रेंड्स. सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है. Government uses that funds on that also. Yes. So whatever funds, friends, whatever tax we pay, जो भी हम टैक्स पे करें गवर्नमेंट वो सारे पैसे को कंट्री के बेटरमेंट के लिए क्या करे फ्रेंड्स यूज करते. Yes. So friends, in India we used to have so many kinds of tax. अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस होते हैं. Yes. We used to have so many kind of taxes. But whatever different kinds of taxes we have, friends, whatever different kinds of taxes we have, all those taxes can be categorized into two categories. जितने भी taxes है friends, आप उनको दो अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं friends? You can divide it. What are those two categories basically, friends? Those two categories are called as direct tax and indirect tax. Some taxes are there, friends, which are called as direct tax, and some taxes are called as indirect tax. कुछ taxes को हम direct tax में रखते हैं, and कुछ taxes को हम कौन सी category में रखते हैं? Indirect tax. So let's start to understand what is a difference between what is a difference between direct tax and indirect tax. Friends. Let's start to understand the difference between direct tax and indirect tax. Difference between direct tax and indirect taxes. Example, friends. I'm working for the organization TCS. मैं TCS लिमिटेड में एज अकाउंट्स मैनेजर काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स. टाटा कंसल्टेंसी सर. एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एग्जाम्पल. आई एम नॉट वर्किंग एक्चुअली.
Example. Is so I'm working as an employee in the organization called as TCS Limited. Accounts manager में as a accounts manager काम कर रहा हूँ. Yes. So for that, okay, I'm working in TCS Limited. So TCS Limited, I'm working. So they are employer friends, or मैं कौन हो गया friends? I will be called as employee. TCS Limited is an employer, and I will be called as what friends? Employee. Yes. I'm not working free of cost, obviously, friends. Whatever services I'm giving as an employee, for that employer pays me the salary. Employer क्या पे करता है फ्रेंड्स हमको? एम्प्लॉयर हमको क्या पे करता है फ्रेंड्स? सैलरी पे करता है. एम्प्लॉयर सैलरी पे करता है तो एज अ एम्प्लॉई फ्रेंड्स, as a employee we receive the salary. Employer pays the salary, so as a employee friends we receive the salary. Yes. Yeah. So employer pays the salary, so from employer's point of view, employer के point of view से friends salary paid is an expenses, and from employee's point of view friends, from employee's point of view हमारे लिए क्या हो गया फ्रेंड्स? इनकम हो. We receive the salary, so for us it is an income. Whose income it is friends? Salary इसका income है, employees का income है. So friends, whatever salary I'm getting, that is an income. So say suppose friends 50,000 rupees per month I'm earning as a salary. 50,000 rupees per month I'm earning as a salary. So as soon as you earn the income friends, जैसे आप income earn करोगे, क्या था मेरे लिए income का source? Salary 50,000 rupees per month. One financial year comprises of friends. In one financial year we have how many months? One financial year comprises of 12 months friends. April to March we have 12 months. So total income, मैंने total income कितना earn किया? I have earned total income of 6 lakhs. Friends, I have earned the total income of how much? 6 lakhs. मैंने total income कितना earn किया friends? 6 lakhs earn किया. ओके, 6 lakhs इज माई इनकम. जैसे आप इनकम कमाओगे फ्रेंड्स, हुज इनकम इट इज? किसने इनकम कमाया? एम्प्लॉय ने इनकम कमाया. एज सुन एज यू अर्न द इनकम, गवर्नमेंट आएगी और आप बोलेगी सर थोड़ा पैसा हमें चाहिए. गवर्नमेंट आपके पास आप आके बोलती है सर वी नीड सर्टेन फंड, हम आपकी इनकम में से थोड़ा पैसा हमको चाहिए. हमने बोला क्यों चाहिए गवर्नमेंट, व्हाई यू नीड? सेम रीजन सर, हमको हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, देश का भला करना है, वो करना है, उसके चाहिए, उसके लिए चाहिए. ऐसे लोग के हाउ हाउ मच यू नीड गवर्नमेंट, कितना चाहिए गवर्नमेंट? बोलते सर वी नीड ओनली 5%. एग्जाम्पल पे 5%. गवर्नमेंट ने हमसे कितना मांग लिया फिर? 5%. सो 5% of 6 lakhs, and 5% of 6 lakhs will be how much? 30,000. What is this 30,000 friends? 30,000 को क्या बोलेंगे? This is a tax. 6 lakhs हमने अर्न किया फ्रेंड्स. Out of 6 lakhs, 30,000 I have paid to the government. 6 लाख मैंने अर्न किया, 6 लाख में से 30,000 मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया. कितना पे कर दिया गवर्नमेंट को? 30,000 पे कर दिया. किसने पे किया? मैंने मतलब कॉन्फ्रेंस एम्प्लॉय नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते जिस पर्सन ने इनकम अर्न किया था. मैंने इनकम अर्न किया था, मैंने टैक्स पे किया. 30,000 टैक्स कहाँ से पे किया? जो इनकम मैंने अर्न किया था. 30,000 टैक्स मैंने कहाँ से पे किया? द इनकम विच आई हैव अर्न, आउट ऑफ दैट इनकम आई हैव पेड दैट टैक्स. So since this 30,000 tax is paid out of income, that's why friends, that's why it is called as income tax. 30,000 टैक्स हमने कहाँ से पे किया फ्रेंड्स? इनकम जो मैंने अर्न किया था उस इनकम में से मैंने पे किया. उस इनकम में से आई हैव पेड द टैक्स. That's why friends, that's why it is called as what?
income tax. Yes, that's why it is called as friends income tax. So friends, 6 lakhs I have earned. Out of that 30,000 I have paid tax. मेरे पास बैलेंस कितना इनकम बचा? 5,70,000. मेरे पास बैलेंस इनकम कितना बचा फ्रेंड्स? 5,70,000. Yes or no? Balance income is 5,70,000. So who has paid this tax, friends? ये टैक्स गवर्नमेंट को किसने पे किया? द पर्सन हु हैज अर्न द इनकम. जिस पर्सन ने इनकम क्या किया था फ्रेंड्स? अर्न किया था, दैट पर्सन हैज पेड दिस टैक्स. The person who has earned the income, that person has paid the tax. So that's why it is called as income tax. And since this tax is paid out of income, friends, this tax is paid out of income. That's why 30,000 tax is paid out of income. That's why it is called as, friends. That's why it is called as what? Income tax. That's why it is called as what, friends? Income tax. Yes. Okay. So example of direct tax. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया फ्रेंड्स? एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स मींस फ्रेंड्स it is an what friends? Income tax. Example of direct tax means friends it's your income tax. Right friends? Example of direct tax means it's your income tax. Okay, let's discuss the definition of indirect tax. Indirect tax भी थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है? We covering both. We will be learning both and direct and indirect tax both हम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे obviously. इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल के थ्रू वो भी हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है. अब ना फ्रेंड्स, से सपोज आई जस्ट वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन फॉर माई सेल्फ. मुझे अपने लिए ना एक फोन खरीदना है फ्रेंड्स. सो आई हैव डिसाइडेड टू परचेज अ फोन फ्रॉम क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक. आई हैव डिसाइडेड टू परचेज फोन फ्रॉम क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. मैंने डिसाइड किया कि मैं फोन कहाँ से खरीदूंगा फ्रेंड्स. आई विल परचेज इट फ्रॉम क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. क्या खरीद रहा हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे? आई एम बाइंग अ फोन. फोन इज सोल्ड बाय होम? क्रोमा. प्रोडक्ट सेल कौन कर रहा है? फोन इज अ प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट सेल कौन कर रहा है फ्रेंड्स? फोन इज सोल्ड बाय क्रोमा. सो क्रोमा इज अ सेलर हियर फ्रेंड्स and it is purchased by me. So I am a purchaser or I will be called as buyer or customer. Yes friends. So say suppose प्रोडक्ट की प्राइस है, जो मैंने फोन चॉइस किया फ्रेंड्स, चूज किया मैंने, उसकी प्राइस है 50,000. The phone which I have chosen has a price of 50,000. मैंने जो फोन चॉइस किया उसकी प्राइस 50,000 है. As you can see till now, ये ट्रांजेक्शन में how many parties were involved friends? There are two parties. One is the seller, another one is buyer. एक seller है, दूसरा कौन है फ्रेंड्स? Buyer है. Okay. Now there will be an entry of government. अब इस पिक्चर में किसकी एंट्री होती है? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट डायरेक्टली किसके पास जाता है फ्रेंड्स? सेलर के पास, क्रोमा के पास जाता है. क्या बोलता है? ध्यान से सुनना. क्रोमा यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. गवर्नमेंट क्रोमा को बोलता है कि क्रोमा आप अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहे हो. क्रोमा सेज यस सर वी आर सेलिंग. एनी प्रॉब्लम? गवर्नमेंट सेज नो प्रॉब्लम, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट है, आप सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो गवर्नमेंट पूछता है यू आर सेलिंग फॉर व्हाट प्राइस? आप अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हो? क्रोमा बोलता है सर हम ये प्रोडक्ट कस्टमर को 50,000 में बेच रहे हैं. गवर्नमेंट बोलता है ओके. ना गवर्नमेंट ने क्रोमा को क्या बोला फ्रेंड? गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड द सेलर टू चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा. गवर्नमेंट ने सेलर को बोला कि यू हैव टू कलेक्ट एक्स्ट्रा अमाउंट from your customer because
आप प्रोडक्ट सेल करो, दिस इज सेल्स टैक्स। जैसे इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स भरते हैं फ्रेंड, तो क्रोमा ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्रोमा को क्या बोला, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, तो यू हैव टू कलेक्ट अ टैक्स विच इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स। आज जो सेल्स टैक्स को ही हम बोलते हैं फ्रेंड जीएसटी। सो सेलर सेज ओके गवर्नमेंट, मुझे क्या करना है, आई हैव टू कलेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, आई मीन कस्टमर, हाउ मच आई शुड कलेक्ट। सेलर बोलते हैं सर गवर्नमेंट हाउ मच आई शुड कलेक्ट, सो गवर्नमेंट ने बोला डू आई थिंक कलेक्ट 18%, कलेक्ट 18%। So what was the price of product? Friends? Price of the product was 50,000. Price of the product is 50,000. 18% of that, 18% of 50,000 comes to, yes friends, 9,000. So final selling price, Chroma will sell the phone to the customer for 59,000. Seller customer को phone कितने में बेचेगा friends? Seller is going to sell the product to the customer for 59,000. So seller, after selling the phone, seller will collect, friends, Chroma is a seller. Seller will collect total 59,000 from the customer. Friends, seller will collect total 59,000 from customer. Yes or no, friend? Seller customer से total कितना collect करेगा friend? 59,000. Out of this, friends, out of 59,000, इसमें से seller का कितना income है? Out of 59,000, friends, 50,000 belongs to seller. Then 50,000 belongs to whom? Seller. क्रोमा ने कस्टमर से 59,000 लिया, 50,000 सेलर का इनकम है। 50,000 का क्या करना, हु विल डिसाइड फ्रेंड्स? सेलर विल डिसाइड। 50,000 का क्या करना, हु विल डिसाइड? द सेलर विल डिसाइड। एंड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रेंड्स, द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 9,000 which is a tax, which is a GST। अभी ये पैसा किसके पास है फ्रेंड्स? हु हैज दिस मनी? सेलर हैज दिस मनी। अभी 9,000 पैसा किसके पास है? टैक्स का पैसा किसके पास है? सेलर के पास है। सेलर हैज टू पे, क्रोमा हैज टू पे दिस 9,000 टू द गवर्नमेंट। 9,000 रुपया क्रोमा किसके पास लेके जाएगा? गवर्नमेंट के पास ले जाके जमा कर देगा फ्रेंड्स। 9,000 they will pay to the government. Who will pay to the government, friend? Seller will pay to the government. Who is a seller here? In our example, friends, seller is a chroma. But friends, does 9,000 is paid by seller from his own pocket? यहाँ पे ये टैक्स गवर्नमेंट को तो सेलर पे कर रहा है फ्रेंड, बट सेलर क्या अपनी जेब से भर रहा है फ्रेंड्स? नो फ्रेंड्स, सेलर इज नॉट पेइंग दिस 9,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। This 9,000 seller is not paying out of his own pocket, friend. Seller has collected this 9,000 from whom? Buyer. Friends, क्रोमा ने टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कैसे किया? क्रोमा हैज कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम बायर। सेलर ने टैक्स किससे कलेक्ट किया? बायर से कलेक्ट करके पे किया। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। Why it is called as indirect tax? Because the seller is collecting the tax from buyer. So seller tax buyer से collect करा, means friends seller has shifted the burden of tax. Seller ने tax का burden किसके ऊपर डाल दिया? Buyer के ऊपर डाल दिया friends. Seller has shifted the burden. Seller has shifted the burden of tax on buyer. Yes, that's the friend. It is called as indirect tax. So 9,000 government को कौन पे कर रहा है फ्रेंड? 9,000 is paid to the government by seller, but seller has collected 9,000 from buyer, friends. Seller has collected 9,000 from whom? Buyer. Seller has collected 9,000 from whom, friends? Buyer. Right? Okay. Okay. So what is the difference between direct tax and indirect tax, friends? In case of direct tax, friends, burden of tax payment cannot be shifted. मतलब friends, डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वो खुद अपनी इनकम में से टैक्स भरेगा। जैसे फ्रेंड्स, आई वाज अर्निंग द इनकम, मैं इनकम अर्न कर रहा था, मैंने खुद अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को क्या पे किया फ्रेंड? टैक्स। आई हैव पेड टैक्स आउट ऑफ माय ओन इनकम फ्रेंड्स, आई हैव पेड टैक्स out of my own income. I cannot shift my burden on someone else.
फ्रेंड्स मैं अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। आई कांट शिफ्ट माई बर्डन ऑन समवन एल्स। हम अपना बर्डन और किसी के ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते। मतलब इफ इट इज माई इनकम, आई हैव टू पे द टैक्स। मेरा इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स भी किसी से पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। आई कांट शिफ्ट माई बर्डन ऑन समवन एल्स। मैं अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता फ्रेंड्स। यस। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है फ्रेंड्स? सेलर हैज कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम होम। सेलर हैज कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम होम। यहाँ पे सेलर 9,000 टैक्स कलेक्ट किससे करा फ्रेंड? बायर से। सो सेलर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया बायर में। वो दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सेलर शिफ्ट द बर्डन, सेलर पास ऑन द बर्डन ऑन बायर, whereas in case of direct tax burden of tax payment cannot be shifted। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आप अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। दैट्स अ फ्रेंड दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। सो what is the example of indirect tax friends? Example of indirect tax. GST, GST. Nowadays we have only one tax in India which is considered as indirect tax, that is a GST. Yes, we have only one tax in India which is considered as GST as an indirect tax. Okay, चलो continue कर फ्रेंड। will continue as of now direct tax, indirect tax continue करते हैं। So what is the meaning of direct tax means? Meaning of direct tax means income tax। किसी भी सोर्सेज से आप इनकम अर्न कर रहे हो, किसी भी सोर्सेज से आप इनकम क्या कर रहे हो फ्रेंड्स? अर्न कर रहे हो। आउट ऑफ दैट इनकम, आउट ऑफ दैट इनकम यू हैव टू पे द टैक्स। आप किसी भी सोर्सेस आप इनकम अर्न करिए फ्रेंड्स, आपने जो इनकम अर्न किया है उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना है। कौन भरेगा टैक्स फ्रेंड्स? द पर्सन हु अर्न्स द इनकम। यहाँ पे फ्रेंड पर्सन कौन था जो इनकम अर्न करा था? एम्प्लॉय मैं था। 6 लाख रुपीज इनकम मैंने कमाया था। तो 6 लाख के ऊपर 30,000 टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है फ्रेंड्स। तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। So what is the meaning of income tax, friends? It is very simple. Income tax means tax on the income. It is a tax on the income. Income के ऊपर जो टैक्स भर रहे हो वो क्या है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स है। Income tax is basically friends, it is a tax on income friends. It is a tax on income। आप जो भी सोर्सेज से इनकम कमा रहे हो फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या भरना है? टैक्स भरना है। वट एवर सोर्सेस ऑफ इनकम यू हैव, जो भी आपका इनकम का सोर्स है उस इनकम के सोर्स के ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या भरना है फ्रेंड? टैक्स भरना है। कौन भरेगा फ्रेंड टैक्स? द पर्सन हु अर्न्स द इनकम। जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इनकम अर्न कर रहा था, मैं टैक्स भरूंगा। तो फ्रेंड्स द पर्सन हु अर्न्स द इनकम इज लायबल टू पे द टैक्स। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम बोलते हैं असेसी। जो लोग अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को क्या भर रहे हैं फ्रेंड्स? टैक्स भर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स असेसी। जैसे यहाँ पे मैंने एज ए एम्प्लॉय मैंने इनकम अर्न किया था 6 लाख। 6 लाख में से हमने गवर्नमेंट को, मतलब मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, तो मुझे क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? असेसी। आई विल बी कॉल्ड एज व्हाट? असेसी। सो हु इज असेसी फ्रेंड्स? कौन है असेसी? यहाँ पे मैं असेसी हूँ। सो असेसी मीन्स अ पर्सन फ्रेंड्स। आई एम अ पर्सन हु अर्न्स द इनकम। असेसी मतलब फ्रेंड पर्सन जो इनकम क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। सो असेसी मीन्स द पर्सन। यहाँ पे कौन था पर्सन? मैं पर्सन था। असेसी मीन्स अ पर्सन हु अर्न्स द इनकम। असेसी इज अ पर्सन फ्रेंड बेसिकली हु अर्न्स इनकम। असेसी वो पर्सन है जो इनकम क्या कर रहा है फ्रेंड्स? अर्न कर रहा है।
Okay. Assessee is a person friends basically who earns income and how much income I have earned. मैंने कितना income earn किया था friends? 6 lakh rupees and pays the tax. कितना tax pay किया था? 6 lakh में से कितना tax pay किया था मैंने? 30,000 and pays the tax on the income earned. So we are called as what friends? Assessee. में क्या बोला जाएगा? Assessee. So assessee is basically friends the person who earns the income and pays the tax out of the income earned. Assessee वो पर्सन होता है जो इनकम क्या कर रहा है फ्रेंड्स अर्न कर रहा है और अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को क्या भर रहा है फ्रेंड टैक्स भर रहा है. सो फ्रेंड्स देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेस. सिर्फ हमारे जैसे लोग टैक्स नहीं भरते फ्रेंड. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हाट फ्रेंड्स असेसी. So let's discuss what are the different categories of assess. First category of assessee is friends individual assessee. आप और हम सब लोग a human being. हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे फ्रेंड्स? You and me, we all are classified as individual assessee. A human being, friends, a human being. We all will be classified as which kind of assessee? आप और हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? इंडिविजुअल एसएससी, राइट. सेकंड कैटेगरी क्या है फ्रेंड्स? सेकंड कैटेगरी एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सेकंड कैटेगरी क्या है फ्रेंड्स? इज एचयूएफ which is called as Hindu undivided family. हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, ये भी डिस्कस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है. HUF. Okay. My father has started, my grandfather basically, or my father only. Let's take an example. My father has started one small dairy shop, friends. मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान है, डेयरी शॉप, जहाँ पे मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम सेल करते हैं. अब सेम बिजनेस जो मेरे फादर ने, सेम जो शॉप है जो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, हम सब लोगों ने भी वही बिजनेस क्या कर लिया फ्रेंड? ज्वाइन कर लिया. यस, हम सब लोगों ने भी वही सेम बिजनेस ज्वाइन कर लिया फ्रेंड्स. मेरी मॉम भी वही बिजनेस कर रही है. यस, मेरी मॉम भी वही बिजनेस कर रहे हैं. हम सब साथ में मिलकर बिजनेस चला रहे हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड. माय फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. घर पे सबसे बड़े वही है फ्रेंड्स, हेड ऑफ द फैमिली, मोस्ट सीनियर पर्सन. तो head of the family, friends, head of the family is called as what? Head of the family को हम बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कर्ता. एचएफ के केस में दिस इज कॉल्ड एज कर्ता. अदर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स, अदर फैमिली मेंबर, हम सब लोग तो छोटे हैं. अदर फैमिली मेंबर्स, other family members will be called as co-partners. Other family members, friends, will be called as what? अदर फैमिली मेंबर को कौन सी कैटेगरी में हम रखेंगे फ्रेंड्स? को-पार्टनर्स. एंड ये सबको साथ में क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? साथ में कंबाइन करेंगे तो दैट दे ऑल विल बी कॉल्ड एज एचयूएफ. साथ में इन सबको क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स?
HUF बोला जाएगा. So HUF means friends Hindu. H stands for Hindu. All of them are Hindu by caste. Undivided means friends क्योंकि सब साथ में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते. सो अनडिवाइडेड. एंड सिंस फ्रेंड्स सब लोग साथ में रहते हैं तो दे आर फैमिली. सब साथ में रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ फैमिली. दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. वेयर हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता. जो फैमिली का जो हेड है उससे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्ता. एंड एंड other family members, yes, other family members are called as what friends? Co-partners. अदर फैमिली मेंबर्स को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? को पार्टनर्स बोला जाएगा. अदर फैमिली मेंबर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? को पार्टनर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स. अच्छा, व्हाई डू वी स्टार्ट एनी बिजनेस फ्रेंड्स? ये जो हम मेरे फादर ने जो बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, व्हाई डू वी स्टार्ट एनी बिजनेस? हमने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? Why do we started this business? To start any business, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट. एंड अगर आप बिजनेस रन करो, यू विल अर्न द प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स इनकम. प्रॉफिट मीन्स फ्रेंड्स इट इज इनकम. एंड when you earn income, when you earn income friends, you have to pay what? Tax. जब आप इनकम अर्न करते हो तो उस इनकम पे आपको क्या भरना पड़ेगा? टैक्स. मेरे फादर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, that is for the purpose of earning what? Profit. जो स्टार्ट किया फ्रेंड प्रॉफिट अर्न करने के लिए. प्रॉफिट अर्न किया फ्रेंड, बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न किया मतलब क्या अर्न किया हमने? इनकम अर्न किया. एंड व्हेन यू अर्न इनकम यू हैव टू पे व्हाट फ्रेंड्स? टैक्स. जब आप इनकम अर्न करोगे तो आपको उस इनकम में क्या भरना है? यू हैव टू पे व्हाट फ्रेंड्स? टैक्स. यस. थर्ड कैटेगरी फ्रेंड्स. थर्ड कैटेगरी इज अ पार्टनरशिप फर्म. थर्ड कैटेगरी क्या है फ्रेंड्स? दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म. थर्ड कैटेगरी क्या है फ्रेंड? पार्टनरशिप फर्म. ध्यान से समझना फ्रेंड्स. अब मैं अपने फादर के साथ पहले बिजनेस कर रहा था, बट सोचा कि यार बहुत हो गया फादर के साथ बिजनेस करके, कुछ साथ में करते हैं, अलग करते हैं. फादर के साथ बिजनेस तो ठीक है, चलता रहेगा. यस. तो अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा. अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड. नॉलेज चाहिए. अब ये तो कैपिटल तो फ्रेंड्स इतना है नहीं. नॉलेज ठीक है बिजनेस का, बिजनेस आइडिया है, बट कैपिटल नहीं है. तो मेरे दो और फ्रेंड है. कितने लोग हो गए अभी हम लोग? वी आर 3 इंडिविजुअल्स. हमने साथ में मिलकर फ्रेंड डिसाइड किया बिजनेस करेंगे. तो हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स? मुंबई में हमने एक बड़ा सा शोरूम खरीदा. मुंबई के एक मॉल में बड़ा सा शोरूम खरीदा और हमने नाम रख दिया उसका विजय सेल्स. जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते फ्रेंड. बड़ा सा शोरूम है. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह हमने परचेस किया. बड़ा सा शोरूम है. और वहां से हम अपने शोरूम में से अपना प्रोडक्ट कस्टमर को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? सेल कर रहे हैं. और शोरूम पे जो हमने बिजनेस का नाम रखा बड़ा सा, कौन से नाम से हमने बिजनेस स्टार्ट किया फ्रेंड्स? हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विजय सेल्स. तो किसने स्टार्ट किया फ्रेंड्स ये विजय सेल्स? हु हैज स्टार्टेड दिस विजय सेल्स? विजय सेल्स इज स्टार्टेड बाय फ्रेंड्स मी एंड माय 2 फ्रेंड्स. मैं और मेरे 2 फ्रेंड लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था फ्रेंड्स. तो हम लोग को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? वी वी आर वी आर कॉल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? पार्टनर्स. हम कौन बन गए यहाँ पे फ्रेंड्स? वी आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. हमें क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स. एंड विजय सेल्स, हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, विजय सेल्स फ्रेंड्स, विजय सेल्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप फर्म.
विजय सेल्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? पार्टनरशिप। मैं और मेरे 3 फ्रेंड क्या हो गए फ्रेंड? पार्टनर्स हो गए। ओके। Yes, Vijay Sales is called as a partnership firm, and we all 3 friends are the partners, friends. So why do we start business, friends? Again, same question. Why do we have started Vijay Sales? Vijay Sales हमने क्यों start किया था? Why do we have formed partnership firm? Partnership firm Vijay Sales हमारा start करने का purpose क्या था? विजय सेल्स स्टार्ट करने का हमारा पर्पस था फ्रेंड, बिजनेस करना। विजय सेल्स स्टार्ट करने का हमारा पर्पस क्या था? बिजनेस करना। और बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस क्या था फ्रेंड्स? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया मतलब क्या कमाया फ्रेंड्स? इनकम आपने अर्न किया। इनकम अर्न किया तो इनकम में से क्या भरो गवर्नमेंट को? इनकम आपने अर्न किया ना फ्रेंड्स, इनकम में से क्या भरिए गवर्नमेंट को? टैक्स भर दीजिए। इनकम में से क्या भर दीजिए गवर्नमेंट? टैक्स भर दीजिए। नाउ अज्यूम करते फ्रेंड्स, हमने जो प्रॉफिट अर्न किया 30 लाख रुपीज अर्न किया पार्टनरशिप फॉर्म में। हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, 30 लाख रुपीज प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट के ऊपर क्या भरना है? टैक्स भरना है। प्रॉफिट मतलब इनकम कमाया तो टैक्स भरो, और क्या है? गवर्नमेंट ने बोला 30% टैक्स भरिए। अब गवर्नमेंट जो बोल रहा है फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल सकते उनको। तो 30 लाख के ऊपर 30% तो हमने टैक्स भर दिया। 30 लाख के ऊपर 30% तो टैक्स भर दिया। 9 लाख रुपया तो टैक्स भर दिया। टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट बचा कितना फ्रेंड्स? टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट बचा कितना? 21 लाख। पहले तो ये समझ फ्रेंड, टैक्स भरेगा कौन? 9 लाख रुपए, ये जो टैक्स है 9 लाख रुपीज का जो टैक्स है, हु विल पे दिस टैक्स? द पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म। इनकम किसका है पहले वो डिसाइड करते हैं। जिसका इनकम है वो टैक्स भरेगा, डायरेक्ट टैक्स। 30 लाख प्रॉफिट किसका माना जाएगा? इट इज अ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स और अ पार्टनरशिप फर्म, फ्रेंड्स। 30 lakhs will be profit of partner or partnership firm. So 30 lakhs will be a profit of partnership firm. 30 lakhs किसका प्रॉफिट है फ्रेंड्स? किसका इनकम है वो? It is an income of partnership firm, friends. 30 lakhs is an income of or a profit of partnership firm. So ये 30 lakhs के ऊपर टैक्स कौन भरेगा फ्रेंड? पार्टनरशिप फर्म। कौन है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म कौन सी है फ्रेंड्स? विजय सेल्स। विजय सेल्स इसके ऊपर टैक्स भरेगा। 9 लाख रुपए टैक्स कौन भरेगा फ्रेंड्स? विजय सेल्स विल बी लाइबल टू पे द टैक्स। विजय सेल्स फ्रेंड्स will be liable to pay the tax. Yes. Okay. Now, now friends, what should be done with the remaining profit? बचे हुए प्रॉफिट का क्या करना है? 21 lakhs का क्या करना है? What should be done with the remaining profit? Remaining profit will be divided amongst the partner in their profit sharing ratio. बचा हुआ प्रॉफिट तीनों पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं आप? डिवाइड कर दोगे फ्रेंड्स। Remaining profit will be divided amongst the partners. The 21 lakhs, friends, 21 lakhs will be divided amongst the partners in their profit sharing ratio. So friends, assume that the profit sharing ratio is equal. हमने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट आएगा तीनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो हर एक को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा फ्रेंड?
7 lakhs। तो मैं भी एक पार्टनर था, मुझे प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला? 7 lakhs। अब फ्रेंड 7 lakhs किसका इनकम है? ये 7 lakhs इनकम मिला किसको? प्रॉफिट मिला किसको? पार्टनर्स को मिला। तो 7 lakhs किसका इनकम हो गया? पार्टनर्स का। क्वेश्चन ये है कि ये 7 lakhs के ऊपर क्या पार्टनर्स भी टैक्स भरेंगे? 7 lakhs इनकम तो है इनका। किसका इनकम है फ्रेंड्स? 7 lakhs is the income of partners. So does each partner will be liable to pay tax on 7 lakhs? क्या एक एक पार्टनर भी टैक्स भरेंगे इसके ऊपर, 7 lakhs के ऊपर? So try to understand friends. 7 lakhs is a part of 21 lakhs, and 21 lakhs was a part of 30 lakhs. On 30 lakhs, on entire profit of 30 lakhs, friends, tax is already paid by partnership firm. ये पूरे प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भर दिया है फ्रेंड। 7 लाख 30 लाख का ही पार्ट है फ्रेंड्स, समझो। 7 lakhs इज अ पार्ट ऑफ 30 lakhs, और 30 lakhs के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भरा जा चुका है। एक इनकम के ऊपर कितनी बार टैक्स लगता है फ्रेंड्स? एक बार टैक्स लगता है। इनकम एक ही है तो एक बार टैक्स लगेगा। तो ऑन एंटायर 30 lakhs पार्टनरशिप फर्म हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स। जो पूरा 30 लाख रुपए फ्रेंड्स, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स क्या कर दिया है? पे कर दिया है। तो पार्टनर्स को इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो एज अ पार्टनर मुझे जो 7 लाख रुपीज मिला था फ्रेंड्स, उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरना है। इनकम तो है मेरा, बट आई डोंट हैव टू पे द टैक्स। मुझे टैक्स नहीं भरना फ्रेंड्स। जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता फ्रेंड्स, सच काइंड ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज एग्जम्प्ट इनकम। जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरते फ्रेंड्स, ऐसे इनकम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऐसे इनकम को फ्रेंड्स बेसिकली हम बोलते हैं एग्जम्प्ट इनकम। अब जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे इनकम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट इनकम। तो 7 lakhs प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड बाई ईच partners don't have to pay the tax friends, because on entire profit the partnership firm has already paid the tax. entire profit पे पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है फ्रेंड्स। therefore Therefore, partners are not required to pay the tax. Yes. Oh, oh, okay. Then, okay. Uh, Great. So, friend, this is partnership firm. Next category of assessee, friends. Next category of assessee is called as company. Friends, next category of assessee क्या है? Company. अब हम जो बिजनेस कर रहे थे ना पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रेंड्स, क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज एंड सेल कर रहे थे। ये सुनो, विजय सेल्स के नाम पे। सेम बिजनेस और कौन कर रहा है फ्रेंड्स? अमेजोन से भी तो आप खरीद सकते हो। अमेजोन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस डिजिटल स्टोर लिमिटेड, रिलायंस डिजिटल स्टोर लिमिटेड। यस फ्रेंड्स। और क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। ये लोग भी तो सेम बिजनेस कर रहे हैं। अमेजोन सेलर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंड्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपनीज। इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कंपनी। सो अमेजोन सेलर लिमिटेड, रिलायंस डिजिटल स्टोर्स लिमिटेड, दीज आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स कंपनीज। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है बोलिए? दे आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? कंपनीज। व्हाई व्हाई डू वी स्टार्ट बिजनेस? बिजनेस क्यों स्टार्ट, आई मीन कंपनी हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं?
सेम बिजनेस करने के लिए, बिजनेस क्यों स्टार्ट करें? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अमेजॉन सेलर लिमिटेड एक कंपनी है। इंडिया में दो टाइप की कंपनी आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो फ्रेंड्स, पब्लिक कंपनी एंड फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी। कंपनी स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं फ्रेंड्स? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आरओसी। गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करके रखा है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं। उनका काम क्या है? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन। तो आप कंपनी के पास, आरओसी के पास गए, नॉट कंपनी, आरओसी, उनको बोला कि आप मुझे कंपनी स्टार्ट करना है। वो बोलते हैं दो डॉक्यूमेंट लगेगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम में आपने लिखा कि आप जो कंपनी बना रहे हो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है। आर्टिकल्स में आपने लिखा कि जो अपनी कंपनी बनाया है या बनने वाली है उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या एप्लीकेबल है। तो मेमोरेंडम लगेगा, आर्टिकल लगेगा। आप नई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, उसके साथ साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना फ्रेंड्स, फीस वगैरह भरना पड़ेगा। ये सब हमने किसको दे दिया? ये सब भर के हमने किसको दे दिया फ्रेंड्स? आरओसी में जमा कर दिया, गवर्नमेंट के ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उन्होंने हमारा सारा डॉक्यूमेंट चेक किया। चेक करने के बाद लगा कि हाँ कंपनी जेन्यून है, कोई फ्रॉड वाला बिजनेस नहीं है, तो वो हमको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद हमारी कंपनी क्या हो जाती है फ्रेंड? बोलो। रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स देखिए, रिलायंस डिजिटल स्टोर, इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, इंडियन बेस्ड कंपनी है, मुकेश भाई अंबानी ने स्टार्ट किया है। ये उसके ओनर है, डायरेक्टर होते हैं फ्रेंड। कंपनी में मैनेज कौन करता है कंपनी को? डायरेक्टर मैनेज करते हैं। तो रिलायंस डिजिटल स्टोर इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन कंपनी इन इंडिया। रिलायंस डिजिटल स्टोर को एज एन कंपनी इंकॉर्पोरेट किया गया है फ्रेंड्स। कहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया गया है? इंडिया में इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो ऐसे कंपनी को आप बोलते हो फ्रेंड्स डोमेस्टिक कंपनी। ऐसे कंपनी को आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डोमेस्टिक कंपनी। अमेजॉन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी कंपनी है फ्रेंड्स, बट अमेजॉन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन incorporated outside India friends. Amazon Sellers Private Limited is being incorporated outside India. Since it is incorporated outside India, so this is called as friends. Amazon will be called as what friends? Foreign company. Amazon Sellers Private Limited को क्या बोला जाएगा friend? Foreign company. So there are two categories of companies friends. One is a domestic company, another one is friend foreign company. एक आपका क्या हो गया? डोमेस्टिक कंपनी हो गया, और दूसरा क्या है फ्रेंड? फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं फ्रेंड? डोमेस्टिक कंपनी हम किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक कंपनीज आर बेसिकली फ्रेंड दोज कंपनीज which has been incorporated. Domestic companies are basically friend those companies which has been incorporated in India, whose incorporation or registration is being done with ROC of India. So those companies are called as domestic companies. Foreign companies are those companies friend which has been incorporated or registered outside India, but they came to India also. फॉरेन कंपनी मतलब जिसका इंकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, बट वो कहाँ पे आए? इंडिया में भी आके बिजनेस करें, इंडिया में आके बिजनेस करें, तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा? फॉरेन कंपनी। इंडिया में आके आप बिजनेस करें तो प्रॉफिट भी ये लोग कहाँ पे अर्न करेंगे? इंडिया में। इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रहे तो फिर टैक्स भी कहाँ पे करोगे? टैक्स भी आप कहाँ पे पे करोगे? इंडिया में पे करोगे। सो दोज कंपनीज आर कॉल्ड एज domestic, I mean foreign company, not domestic. They are called as what friends? Foreign companies. Yes. So these are the friends. These are the four categories of associates friends who are liable to pay the tax. First category क्या था friends? Individual. The people like you and me friends. The people like you and me. We will be classified as friends. We will be classified as which kind of associate?
आप और हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे फ्रेंड्स? इंडिविजुअल. व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स? HUF. What is the next category friends? HUF. HUF means friends Hindu undivided family, where the head of the family is called as friends कर्ता. घर में जो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल लेते हैं, मेरे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, सेम बिजनेस मेरे फादर कर रहे हैं, सेम बिजनेस हम भी कंटिन्यू करें, तो उस केस में घर पे सबसे बड़ा कौन हो गया? दादाजी, ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर करता हो जाएंगे. उसके बाद मेरे फादर और हम सब अदर फैमिली मेंबर, हम लोग को क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? को पार्सन. हम लोग को क्या बोला जाएगा? को पार्सन. तो सेकंड कैटेगरी इज फ्रेंड्स HUF. Second category is what friends? HUF. Third category friends. Third category is friends partnership firm. Yes, in case of partner friends, in case of partnership firm, the person who start the business, they are called as partners. And the business which they have started, business friends which they have started, that is called as the business which they have started, that is called as friends a partnership firm. So whatever profit is earned, friends, whatever profit is earned, on that profit, the partnership firm will be liable to pay the tax. जो भी प्रॉफिट कमाए फ्रेंड्स, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? द पार्टनरशिप फर्म विल पे द टैक्स. Whatever profit is earned on that profit, friends, who will pay the tax? The partnership firm will pay the tax. And the remaining profit, when remaining profit after tax payment will be divided, remaining profit after the tax payment will be divided amongst the partners in their profit sharing ratio. Since friends, on entire profit, the partnership firm has already paid the tax. पूरे प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर लिया है. सो ईच इंडिविजुअल पार्टनर्स आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स. हर एक पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर पार्टनर टैक्स नहीं भरेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज पूरे इनकम के ऊपर ऑलरेडी एक बार टैक्स आ चुका है. राइट. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स, वी हैव कंपनीज. In company, how many categories we have friends? Two categories: domestic company and foreign company. So domestic companies are basically friends those companies which has been incorporated or which has been registered in India are called as domestic company. Foreign companies are basically friends those companies which has been incorporated outside India, whose incorporation or registration has been done outside India, but they came to India also. So they are doing business in India. Since they are doing business in India, they are earning profit in India. They are earning profit in India, so they have to pay tax in India. They have to pay tax in India. Such kind of such kind of companies are called as such kind of companies are called as what? Foreign company. ऐसी companies को क्या बोलते हैं friends? हम लोग foreign companies बोलते हैं. Understood friends? Did you all understood till here? Any doubt friends? Anyone? Any doubt till here? यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को? No doubt friends. No problem. तो लेट्स क्लोज फॉर द डिफरेंस. आज के लिए क्लोज करते हैं. विल मीट ऑन फ्राइडे, देन विल कंटिन्यू. आज के लिए क्लोज करते हैं. फ्राइडे मिलेंगे फ्रेंड्स सब लोग. फ्राइडे नहीं, हमसे वेडनेसडे आएंगे. विल मीट ऑन वेडनेसडे एंड देन विल कंटिन्यू. यस. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइमिंग्स. Yes, we have started with income tax. So make sure that friends, you are not missing a session. Income tax is also very much interesting, friends. It is connected with TDS. So that's why I have started with the income tax. Yes, friends, it is connected with TDS. That's why I have started with income tax. So make sure that friends, you are not missing any session on this income tax. Okay.
So let us close for the day, friends. आज के लिए close करते हैं. We'll meet on Wednesday. Yes. Thank you, friends. Thank you so much. And happy Janmashtami, everyone. Uh, have a great day.